Hello students, I am starting a series on questions, physics questions which are likely to be asked there in the exam 2025 for NEET. These are the expected questions that I am discussing, and we will be uploading questions every day. This is the expected question for NEET 2025. A body dropped from height h, what is its velocity when it hits the ground? एक बॉडी को हाइट से रिलीज किया जाता है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. लेकिन इसके तीन केसेस है. एक केसेस में बॉडी इज जस्ट ड्रॉप्ड एंड देयर फॉर इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. व्हेन इट इज जस्ट ड्रॉप्ड इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो इन द सेकंड केस इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u, एंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. और ये भी कि एट व्हाट एंगल इट हिट्स विद द हॉरिजॉन्टल. तो यहां पर भी if a body has velocity u but it's not projected horizontally, it is projected at some angle. तो तीनों केसों में हम ये निकालेंगे कि with what velocity the body hits the ground. तो तीनों केसेस को किया जा सकता है by conservation of energy, although we can do it by other means also, लेकिन conservation of energy से बहुत easy हो जाता है. Let me take the first case. यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा. ये जो a y है, acceleration in the y direction is minus g, because acceleration due to gravity is vertically downwards towards the center of the earth. तो यहाँ पर horizontal acceleration जो है, acceleration in the forward direction, that is zero, because acceleration is totally downwards. Therefore acceleration in the horizontal direction will be zero. तो similarly यहाँ पर भी acceleration horizontal zero है और vertical acceleration minus g है. So let me go to the first case when the body is just released, and let me solve the question on the basis of conservation of energy. So initial kinetic energy at the top is equal to initial total energy at the top is equal to total energy at the bottom when it hits the ground. E1 is equal to E2. तो ये एक केस में सॉल्व करके आप देता हूं. तो what is the total energy at the top? In the first case, it has no kinetic energy. So kinetic energy plus potential energy at the top is equal to kinetic energy plus potential energy at the bottom, position number second. इसको second position कह सकते हैं, इसको first position कह सकते हैं. तो kinetic energy is zero. Oh sorry, yes, zero, because it is just released. Plus potential energy is mgh is equal to kinetic energy will be something like 1 by 2 mv square. Potential energy is zero. If we take this reference as zero potential energy, you can take reference line as zero potential energy, any reference line here or here, but let us take the ground position as the zero potential energy. Now while solving this is equal to m और m कैंसिल होगा, और ये जो v है it is 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा h, और ये रूट ये है the velocity with which it hits the ground. But when the body is just released from certain height with initial velocity zero. When you say just release, that means initial velocity zero. In the second case B, the body is horizontally projected with initial velocity u. So in that case, what will be the final velocity here? With what velocity it will hit the ground? Again, E1 is equal to E2. E1 top position total energy, that is 1 by 2 mu square plus mgh is equal to what is the total energy at the bottom position? That's kinetic energy is 1 by 2 mv square plus potential energy is zero on the ground level. So when you simplify this, m gets cancelled throughout. So v square is equal to, it is 2 multiplied everywhere, it is u square plus 2gh. So it is v equal to root of u square plus 2gh. This is the answer. But you can do it other way around also. ये जो u है, क्योंकि horizontal acceleration zero है, इसलिए यहाँ जो ये velocity, forward velocity है, ये velocity, that will be the same as u, because there is no horizontal acceleration. So it will be u. और ये जो vy है, you already know it is root of 2gh. तो टोटल वेलोसिटी इन दो कंपाउंड्स का रिजल्टेंट होगा. तो उस हिसाब से आपको मिलेगा आंसर रूट ऑफ दिस इज यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज 2gh. आपको सेम आंसर मिला, लेकिन इसे आपको ये सीख मिला है कि ये जो इनिशियल यू वेलोसिटी है, द फॉरवर्ड वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल बी द सेम.
as u because there is no forward acceleration. तो vertical velocity change हो जाएगा because there is acceleration in the y direction. तो इस चीज को आप इस तरह से कर लें और लगे हाथ आपको ये भी मिलेगा थीटा क्या है. अगर आपको थीटा चाहिए दैट इज tan इनवर्स vy by u, that is root of 2gh by this u. थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड, इट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल. सो इन दैट केस व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड? उसका आंसर आप ऐसे निकालेंगे. लगाना तो वही है. You have to use the same rule, energy conservation. So what is the energy at the top position? See, in this case, energy at the top position is 1 by 2 mu square, and potential energy is again mgh. It is the total energy at the top position. What is the total energy at the bottom position when it hits the ground? उसमें क्या करेंगे आप? उसमें पहले 1 by 2 mu square लिखना पड़ेगा, प्लस अगेन 0 पोटेंशियल एनर्जी. तो उस सूरत में भी जब आप v निकालोगे, m तो कैंसिल होगा थ्रू आउट, तो v स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई करने से u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर. सो व्हाट शुड यू राइट? v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh. ये है आंसर. लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, इसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे अगर आपको और भी कुछ चीजें चाहिए. अगर वेलोसिटी है दैट इज सिंपल, मगर अगर और भी आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा इन द एंड पोजीशन और वर्टिकल वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको यहाँ कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. बट द प्रेजेंट क्वेश्चन इज ओनली व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. सो इट हैज द सेम वेलोसिटी एज व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एज यू आर पुशिंग इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप पोजीशन. So this is the expected question for 2025. I'll be continuously uploading videos which that will discuss on the most likely to be asked questions in the NEET 2025. Follow my channel, Tantra Sir Physics Classes, and you will get all these series of questions which will be asked for 2025 exams for NEET. Thank you.